Please kindly subscribe our HSC channel and press the bell icon for the updated videos. It's beneficial for you because you will get the latest knowledge and information regarding HSC and KHSC which will brighten your future. अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से गलतियों की वजह से आग लगती है, अगर आपको ये भी नहीं पता कि फ्लेमेबल लिक्विड्स की किस तरह स्टोरेज करना चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनी है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम सेफ़ यूज़ ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम कौन से फ्लेमेबल लिक्विड को यूज़ करेंगे सेफली और किस तरह इसकी प्रॉपर स्टोरेज करनी चाहिए। फ्लेमेबल लिक्विड्स के रूम टेम्परेचर क्या है, क्या क्या तरीक़ाकार वज़ा किए जा सकती है एक सेफ़ यूज़ ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए, तो आइए तफसील से जानते हैं। इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक फ्लेमेबल लिक्विड्स का जो फ्लैश पॉइंट है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लिक्विड्स वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप डीजल और पेट्रोल को देखें तो एक रूम टेम्परेचर में, कम टेम्परेचर में ये इजीली आग को पकड़ सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान ये दे सकती है, फायर लग सकती है। तो इस वजह से इसका सेफ यूज़ ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड या सेफ स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड एक रूम टेम्परेचर में प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ रखना ये हमारी ऊपर लाजिमी है, ताकि इससे कोई हैज़र्ड्स या कोई big consequences क्रिएट ना हो। We need to know what defines a flammable liquid. Here is the definition. A flammable liquid is any liquid having a flash point at or below 199.4 degrees Fahrenheit. Then, flammable liquids are divided into 4 categories. Category 1 are liquids with flash points below 73.4 degrees Fahrenheit and boiling points at or below 95 degrees Fahrenheit. Some examples are acetaldehyde and ethyl ether. Category 2 are liquids with flash points below 73.4 degrees Fahrenheit and boiling points at or above 95 degrees Fahrenheit. Some examples of those are acetone, benzene, and toluene. Category 3 are liquids with flash points at or above 73.4 degrees Fahrenheit and at or below 140 degrees Fahrenheit. And last, category 4. Those are liquids having flash points above 140 degrees Fahrenheit and at or below 199.4 degrees Fahrenheit. Your SDS or safety data sheet to find out what the flash points are for each chemical you have. Or you can also look at the labeling on some of your chemicals which now have their GHS or Global Harmonization System labeling on them. Now that we know what a flammable liquid is, how much can we store outside of a specially designed room or cabinet? Well, here are the limits. It's up to 25 gallons of Category 1 liquids in containers, 120 gallons of Category 2, 3, or 4 liquids in containers, and 660 gallons of Category 2, 3, or 4 liquids in a single portable tank. The next important thing to know is how much can we actually store inside of a flammable liquid storage cabinet like this one. No more than 60 gallons of Category 1, 2, or 3 flammable liquids, and no more than 120 gallons of Category 4 flammable liquids. Additionally, you cannot have more than 3 flammable liquid storage cabinets in a single fire area. There are special design requirements for both metal and wood flammable liquid storage cabinets, and they all need to be labeled with a label that reads flammable and keep away. वहाँ पे जितने भी फ्लेमेबल स्टोर्स है वो प्रॉपर सेपरेट होना चाहिए, डिजिग्नेटेड होना चाहिए और क्लियरली मार्क्ड होना चाहिए, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि यहाँ पे फ्लेमेबल लिक्विड स्टोर हुए हैं। वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे वेंटिलेशन होना चाहिए और मिनिमम टेम्परेचर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, ताकि कोई केमिकल्स या कोई फायर वहाँ पे ना लग जाए। और वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होना चाहिए, चाहे वो ड्रिलिंग हो, वेल्डिंग हो, कटिंग हो, ताकि कोई आग, कोई हंगामी सूरत हाल वहाँ पे क्रिएट ना हो। एप्रोप्रिएट लॉकर्स होने चाहिए और फेंसिंग गार्ड्स होना चाहिए, ताकि हम ईज़िली उनको सिक्योर कर सके, ताकि कोई डिलिबरेटली वहाँ पे इग्निशन सोर्स क्रिएट ना करें। इसी तरह वहाँ पे अप्रोप्रिएट साइन बोर्ड्स हो, वो क्लियरली मार्क्ड हो, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कौन सी फ्लेमेबल लिक्विड्स इस स्टोर के अंदर मौजूद है और इसके नुकसानात क्या है।
اپروپریٹ ہاؤس کیپنگ اور کلیننگ ہمیں کرنی چاہیے اور ڈیلی بیسس پہ ہمیں انسپیکشن کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کا رپورٹ اپنے مینجمنٹ کو دکھا سکیں کہ ہمارے ساتھ کون سے خطرناک فلیمیبل لیکوڈز موجود ہے، اس کی صفائی وغیرہ کس طرح ہو رہی ہے. کنٹینر جو بھی ہو، جو جتنے بھی گیلنز اور جتنے بھی والیوم وہاں پہ فلیمیبل لیکوڈز کا ہو، لیکن وہ منیمم ہونا چاہیے اور میٹل کا بنا ہونا چاہیے تاکہ اس سے کوئی اگنیشن سورس جو ہے وہ پاس نہ ہو سکے. اس طرح ہمیں فائر ریزسٹنٹس اور فائر ایبزاربنٹ میٹ کو یوز کرنا چاہیے کسی بھی ہنگامی صورتحال یا فائر لگنے کے بعد اس چیز کو وہ ایبزارب کر سکے تاکہ فائر سپریڈ نہ ہو سکے. اور اسی طرح فائر ایکسٹنگشر، فائر ہائیڈرنٹ اور فائر ہوزر وہاں پہ اپروپریٹ ڈسپلے ہونا چاہیے کہ کسی بھی آگ لگنے کے بعد ہم اس چیز کو یوز کریں اور فائر کو بجھا سکیں. اونلی اتورائز پرسن اس اسٹور پہ جا سکتا ہے جس کے پاس پرمیشن ہو، جس کے پاس ایکسپیرینس ہو، جس کے پاس ایبیلٹی اور سکلز ہو کہ اس فلیمیبل لیکوڈس کے کیا کیا ہیزرڈس ہیں اور وہ اس ریزسٹنس کو ٹیکل کر سکے. تو اونلی اتورائز پرسن شوڈ بی انٹر فلیمیبل اسٹورز.